यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी कंट्रीज के इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ताकि वो यूएसए में अपना एक क्वालिफाइंग बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर सके और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव हो सके। E2 बिजनेस का एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि आपने एक राइट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करनी है, उसमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने करनी है और ये इन्वेस्टमेंट और बिजनेस सिलेक्शन आपको वीजा एप्लीकेशन से पहले करने होते हैं। सो वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन विच पीपल आस्क मी कि किस तरह का बिजनेस जो है वो करना चाहिए और किस तरह के बिजनेस की इंटरनेशनल मार्केट में या करंटली यूएस की मार्केट में आजकल डिमांड है या ज़्यादा ग्रोथ चांसेस हैं जिसका फ्यूचर स्कोप भी ज़्यादा अच्छा हो। सो मोस्ट ऑफ यू गाइज जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, दे नो दैट आई पर्सनली प्रेफर एंड रिकमेंड only the services business, only the home services business for anybody who wants to start from the scratch until and unless अगर आपके पास किसी खास बिजनेस की कोई एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज मौजूद हो तो then you are good with it. So for example, if a doctor comes to me, he can definitely go for a healthcare services business, or if a school teacher comes to me, he can go for education related businesses. But as long as you do not have a relevant or a particular technical experiences, then home services के business जो है they grow very rapidly, they are very fast growing industries in the market. और सबसे अच्छी बात इन businesses की होती है कि इनमें आप टेक्नोलॉजी की बेस पे आप टेक्नोलॉजी यूज करके इंटीग्रेट करके आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो एंड यू क्रॉस एनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। आप अपनी किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्री के बगैर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। सो होम सर्विसेज के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ही वी हैव लॉन्च्ड अनदर बिजनेस प्रोग्राम जो कि पर्सनल कोरियर एंड डिलीवरी सर्विसेज का बिजनेस या पर्सनल इरैंड्स एंड कंसीज सर्विसेज का बिजनेस है। देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑन माय चैनल, द लिंक वुड बी ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैंने उस पूरे बिजनेस के बारे में, पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में भी डिटेल से एक्सप्लेन किया कि कैसे इरैंड्स सर्विसेज या डिलीवरी सर्विसेज या कंसीज सर्विसेज का जो बिजनेस है, हाउ दैट बिजनेस is another growing market in America other than our of course the cleaning and car wash का business जो कि हमारी अपनी cleaning की franchise है। So that is thecleanables.com और ये हमारा एक errand services का जो project है for those who wanted to enter into a different industry rather than a housekeeping or a cleaning business। तो इनके लिए ये Errandables का project है। So basically आज इस वीडियो में मैं आपको जो explain करने जा रहा हूँ how Errandables model is very lucrative as compared to any other competitive businesses in the market. So what areas are we currently working on? So basically Errandables में जो है वो there are different parameters, so there are different segments of the business, जिसमें से जो है वो of course courier and delivery services का जो business है वो एक one of the prime resource है, prime revenue stream है। इसी तरह जो है वो जैसे पाकिस्तान में बाइकिया की सर्विस है, इसी तरह जो है वो बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में भी जो है वो डिफरेंट सर्विसेज पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज की लोकल सर्विसेज की कंपनीज मौजूद हैं। सो Errandables इज बेस्ड ऑन दोज मॉडल जहां पे यू कैन पिक अप एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। And other than that, we also cover the concierge services areas because USA corporate hub है, यहाँ पे बहुत सारे corporate movements हैं, यहाँ की hospitality industry, housekeeping industry is so huge that we definitely have a good demand from the corporate sector. So the point what I wanted to bring on this video today is अच्छा इस मॉडल के ऊपर भी बहुत सारे क्लाइंट्स ने दे रेज द क्यूरीज टू मी कि इसका रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे होगा, इसकी इनकम पोटेंशियल कितना है, इफ समबडी वांट्स टू जॉइन दैट एज अ इरैंड सर्विसेज पार्टनर प्रोग्राम, बिकॉज वी डू हैव अ इरैंड सर्विस पार्टनर प्रोग्राम जहां पे यू कैन बी द ओनर ऑफ योर इंडिपेंडेंट कंपनी एंड यू बिकम आवर सर्विस प्रोवाइडर एंड वी असाइंड यू अ पर्टिकुलर टेरिटरी एंड बेस्ड ऑन दोज टेरिटरी। जैसे ऊबर का मॉडल होता है कि आप ऊबर में आप अपनी एक जिस भी एरिया में आप काम करना चाहें आप उस एरिया का में अपना काम जो है वो सर्विस अब प्रोवाइडिंग का काम कर सकते हैं। सो सेम काइंड ऑफ अ सर्विस पार्टनरशिप प्रोग्राम व्हाट वी हैव, जिसमें आप अपने किसी भी स्टेट में या किसी भी एरिया में आप अपना अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करके आप हमारे एज अ वेंडर जो है वो हमारे साथ साइन अप हो सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट डिलीवरिंग द वर्क। सो पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि व्हाट इज द काइंड ऑफ स्कोप, व्हाट इज द काइंड ऑफ रेवेन्यूज एंड इनकम स्ट्रीम व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज द
of course investment we are talking about. So basically when it comes to the investment, so because we usually prefer to have at least 2 to 3 vehicles, commercial vans, or the commercial small trucks, box trucks, yeah, pickup trucks on board. So we are talking about at least 125 $150,000 का जो budget है, because we need to buy minimum of 2 vehicles, because आपको E2 के लिए भी qualify करना है. तो आपको 2 vehicles, and then there will be all the other expenses to set up the business, licensing fees, and set up the whole structure. तो इस business की base पे आप E2 को भी qualify कर सकते हैं. So when it comes to the scope of income, or scope of service and revenues and potential of this business, so we just wanted to tell you, okay, it's not only the pickup and delivery, there are other errand services also, other concierge services also. Concierge services may, one of the most lucrative service which we offer is the corporate housing वाले जो हैं, या जो commercial real estate property management companies हैं, we offer them the move in move out inspections, we offer them quality assurance and quality check inspections for properties, for their different the businesses. We offer them concierge services. So there is a lot of the different concierge services which we offer under this umbrella. So basically we just recently signed one of the contract, सिर्फ हमने नोवा का एरिया जो नॉर्थ ऑफ वर्जीनिया का एरिया, so one of the national property management company जो कि पूरे अमेरिका में ऑपरेट करती है, they have probably more than 35 properties in Nova, in our Virginia area. So we just recently signed a contract with them to do the property inspections for those all 35 properties. So when we accumulate all of those, so we are talking about at least $120 to $150, or sometimes even if it goes to $250 per inspection per property. अगर आपका 35 properties का contract है, so you are talking about on average, because not all the properties would require the inspections every month, so on average we are talking about at least $3,000 to $5,000 per month का contract. And the same way we are in negotiations and under the discussions with another the property management company who have probably more than 1,500 properties nationwide, and we get a contract signed, so that itself would be more than $10,000 per month contract. And the same ways we go with the corporate the hotels, we can get the contracts from hospitals, from hotels, from flower shops, from automobiles, from a lot of other businesses. So the sky is the limit, because everybody needs an additional assistant or additional hands in majority of their businesses, and the support services. So basically Errands is all the support service of a business, and whichever the area you would be assigned to, or you would opt in for, कि आप जिस भी एरिया में काम करना चाहेंगे, आप अपने उस एरिया के लोकल जो बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल्स, कॉर्पोरेट बिजनेसेस, you need to tap into those markets. You also start opening those channels, and each client or each contracts can win you a good amount of money. So again, the disclaimer is, this is not not to lure you out, या attractions के लिए, या आपको numbers quote नहीं किए जा रहे. This is just to give you the idea and understanding कि what kind of a volume and what kind of income potential you might expect when you enter into the home services business. तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको अमेरिका में बिजनेस करना है, लेकिन किस तरह का बिजनेस करना है, then I would say you might need to check out erandables.com, check out the services, check out the scope of the business, and if that is something which you are interested into, so feel free to reach out to us, whether it comes to any information or questions about US में बिजनेस कैसे करना है, या e-visas को कैसे pursue करना है, तो feel free to reach out to us. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.